Hello everyone. Welcome to 5 minutes for maths. Namaste. Today we will learn in this video about divisibility rules or tests. Okay, this is our part 1 video. See these numbers. These are some numbers which divisibility test we should know. That numbers are 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 like that. Means हमें नंबर्स के डिविजिबिलिटी रूल्स पता होने चाहिए. अगर देखिए यहाँ पे मैंने एक नंबर लिख के रखा है 2562. सो इफ आई आस्क यू दिस नंबर इज डिवाइड बाय विच नंबर. ओके, सो दैट टाइम यू शुड नो दैट क्विकली विद इन अ सेकेंड दिस नंबर इज डिवाइड बाय 2. व्हाई? बिकॉज यू सी हियर यूनिट प्लेस. सी व्हाट इज दैट? Divisibility rule for 2. If the digit in the unit place of a number is either 0 or even number you know that means 2, 4, 6, 8. From this any number comes at the unit place means it is a even number. Then that number is divisible by 2. Means यहाँ पे 2 आया है. This is even number means this number is divisible by 2. Or you can make another definition also. If last digit is either 0 or even number, then that number is divisible by 2. Let's take another example. If I take here 5624. So within a second you can say that unit place 4 or last digit is 4 means even number. So this number is divisible by 2. Suppose 5, 6, 7, 8, 9, 2, 1. This number is given. So if I ask you, is this number is divisible by 2? So you immediately tell me that unit place having one number which is not even number. So this number is not divisible by 2. देखो हम लोग ऐसे ऑर्डर में आज डिविजिबिलिटी रूल्स नहीं पढ़ने वाले हैं. सो आई मेड सम ग्रुप्स टू अंडरस्टैंड इट. आप लोग इसको अच्छे से दिमाग में रख सकते हो, इसलिए मैंने इसके कुछ ग्रुप्स बनाए. मतलब 2, 4, 8, 16 like that. So in this video we will learn that divisibility rules first and afterwards next one. After 2, next is divisibility rule for 4. See here, divisibility rule for 2 के लिए हमने क्या देखा था? Last 1 digit. Now for 4 we have to see last 2 digits. Means if last 2 digits are divisible by 4 then that number is divisible by 4. For example, if I write here 2436. According to divisibility rule for 4 we check here last 2 digits. So 36 4 के टेबल में आता है क्या? और it is divisible by 4. Let's check that. 4 9s are 36 means this number is divisible by 4. Let's take another example. 45,362. So we will check here last 2 digits. It is divisible by 4? No, it is not divisible by 4. Divisibility rule for 8. इसका रूल क्या है? If last 3 digits are divisible by 8, then that number is divisible by 8. देखो डिविजिबिलिटी 4 के लिए हमने लास्ट 2 डिजिट देखे. अभी फॉर डिविजिबिलिटी रूल फॉर 8 लास्ट 3 डिजिट्स वी विल सी. सो आई ऑलरेडी राइट हियर वन एग्जाम्पल 67251632. Okay, so let's check that last 3 digits are divisible by 8 or not. So if you feel that this is a bigger number, so let's check here. 8 7s are 56. Here 7, here 2. 8 9s are 72. 0 0 means this number is divisible by 8. So simply by solving only last 3 digit you can say that this number is divisible by 8. Divisibility rule for 16. See, for 8 last 3 digit we see. For 16 last 4 digits are divisible by 16 then that number is divisible by 16. मतलब हमें यहाँ पे लास्ट 4 डिजिट्स देखने. अगर आपको एग्जाम में कोई बड़ा नंबर दिया है और उसको अगर पूछा जाए कि ये नंबर किससे डिवाइड होता है
सो दैट टाइम यू शुड नॉट सॉल्व दैट एवरी नंबर, मीन्स ऑप्शंस दिए गए हैं और इसमें से ढूंढो, तो यू शुड नॉट सॉल्व दैट ऑल नंबर्स. सो दैट्स वाई दीज रूल्स आर इम्पॉर्टेंट. सी 2, 4, 6, 7, 8, 9, 5, 3, 1, 6, 3, 2, like this number. If I take this much bigger number and ask you, identify this number is divisible by 16 or not. Just check that last 4 digits. See, we will divide here. 1, 6, 3, 2, 16. Okay, 16 ones are 16, 0, 0. यहाँ से 3 लिया, यहाँ पे 0 लिख दिया, -0, 3, 32, 16 2s are 32, 0, 0. So this number is divisible by 16. देखिए, ये सभी रूल्स पढ़ने के बाद आप लोग के एक बात समझ में आ रही है क्या? सपोज डिविजिबल बाय 2, डिविजिबल बाय 4, डिविजिबल बाय 8 और डिविजिबल बाय 16. Okay, so what is the rule? You check here last digit. Okay, for 4 last 2 digits, for 8 last 3 digits, for 16 last 4 digits you check for divisibility rules. Here what is the degree or what is the power? 2 raised to 1. Here what is the power for 2? 2 raised to 2. Here 2 raised to 3 और here 2 raised to 4. मीन्स यहाँ पे आपको लास्ट डिजिट चेक करना है, यहाँ पे 2 डिजिट, यहाँ पे 3 डिजिट, यहाँ पे 4 डिजिट, like that. Onwards you will start to check that. Means here you will increase one digit. If I take here one example, 2, 4, 8, 6, 5, 8, 1, 6, 4, 8, like that. So immediately you can check here also. Last digit 8, it is divisible by 2. Last 2 digits 48, it is divisible by 4. Okay. So last 3 digits 6, 4, 8. So it is divisible by 8. And last 4 digits, so you can say that it is divisible by 16 also. So if bigger number given, that time this divisibility tests are helpful. Or while solving HCF, LCM, we will take that one also. So for that also all these divisibility tests are important. So this much about today's video. Next divisibility rules we will see on next lecture. अगर आपको ऐसे लग रहा है कि आज मैंने सच में कुछ नया सीखा है, डिफरेंट सीखा है, तो आप इस वीडियो को प्लीज सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए ताकि वो भी सीख सके और मुझे भी थोड़ी प्रेरणा मिल सके कि मैं आपके लिए ऐसे और मजेदार इंटरेस्टिंग वीडियोस बना सकूं. सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. बाय बाय.